your hands. Okay, yes. Okay, so that I'm able to see that कौन से बच्चे ये वाला क्वेश्चन कर पा रहे हैं. Done? Very good. Yes. Jaskirat asked the question about the precedence, or Paramir, I don't remember the name of student. Okay, so precedence of logical operator. Okay, yes, according to you, what will be the output of this statement? Like output after executing this statement? Yes. So 101. No, please raise your hand. Just raise your hand. Those who have done, please raise your hand. Okay, Prashant. Yes sir. जी बच्चे क्या आउटपुट है इसका? 101 आ रहा है सर. 101. Good. Yes. Any other output? Anyone? Gunika? Sir, same output 101. Same output. So number of students are supporting this, huh? Good. Yes. Anyone else? Sir, 011. Very good. 011. Maybe. Anyone with C option? 100. Sir, 10. So 100. 100. Okay, very good. 111. Sorry, last 111. Okay, so yes. Okay, so maybe like we can write all the 8 combinations which are possible with these 3 bits. Okay, done. But the correct output again I'm just saying that this is a compiler dependent issue, but in the most of the compilers, yes, Jaskirat, क्या output होगी इसकी? सर मेरे हिसाब से 111. 111. Jaskirat के हिसाब से 111. Okay, and correct output is this. Okay, now अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो गया, है ना? Done. And before jumping to the conclusion or the justification which is available in the textbook or on the internet, let's try this question. I have just changed the order. Now, yes, according to you, now what will be the output? 111. Sir 110. 110. I'm writing for second option. I'm 110. writing here. Someone is saying 111. 110. Sir. Saying 110. 1 Yes. 0. 110. 110. 110. 110. Okay. So yes, correct answer for this question is 110. Okay. This is easy to predict, guys. Why? Because we know that the in the you can say in the theoretical aspects or concepts what are given, this has higher precedence as compared to precedence of OR. Yes, that is true. Okay, done. While and we know that what is the associativity of logical operators? It is from left to right. Yes or no? Done. Yes. Left to right ही करते हैं ना logical operators. Done. Okay, Yes. so this question, first we are going to discuss this question. In this question, we know that okay, precedence of this operator. Okay, before starting this question, छोटा सा एक और है. Okay, let's suppose I have this expression. Okay, if okay, which operator has higher precedence? Multiply. Okay, so the precedence of operators only decide, like this is how we are going to evaluate. Yes or no? First we are going to evaluate this, then we are going to evaluate this. Okay, done. But the associativity of arithmetic operators are also from left to right. हम स्टार्ट कहां से करते हैं? यहां से स्टैंड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके उस the final calculations are done based upon the precedence.
बट फिर भी हमारे पास ये होता है कि a की वैल्यू लेट्स से 5 है, उसने बोला कि चलो 5 एच साइड रख लो, प्लस आ गया एच साइड रख लो। अच्छा पहले ये वैल्यूएट करना है, फर्स्ट वैल्यूएट दिस एंड देन ऐड 5 इन दिस रिजल्ट। That is what they mean from the precedence. That's how precedence play a important role. Okay, now come to this question. Okay, I'm talking about first this question. We know that precedence of this is high as compared to OR. So my compiler is going to parse it or decode it like this way. Yes or no? Yes. Yes, good. So plus plus a 1, a is going to be 1, and we require that, okay, if this is 1, then we are going to evaluate second, and so this is going to be 1. So output of this is, output of this sub expression is 1. 1 or 1, sorry, on right hand side we have a 1, then we have a logical OR. So do we need to evaluate the operand on left hand side? No. No, sir. So this the plus plus c will not be evaluated. So answer for this question is this 110. Now that is simple. Very means like I hope everyone will understand this what I have just like elaborated here. Then so what's wrong with this? Yes. Done. Okay, now yes, I have told you that answer for this is yes. ये मेरे पास answer for this expression. Okay, let's see how my compiler is going to decode this. Plus plus a or plus plus b and plus plus c. So this is how my compiler is going to decode. Done, bache? Okay, and what is the associativity of this from left to right? When we have evaluated plus plus a क्या हो गया बच्चे? 1, and then your compiler encountered OR operator. Okay, done. Now what is this behavior? Okay, this behavior कि अगर यहाँ पर 1 है तो OR का this expression, no need to evaluate this expression, and if this is 0, and no need to evaluate this expression in OR. Okay, this behavior is known as short circuiting of logical operator. Okay, technical name of this operation. Our compiler is designed in such a way that if your data left hand side operand is 1, it is not going to evaluate your right hand side operand in logical OR. Done, bache? So आपके compiler ने according to precedence, your compiler has decoded your expression like that. But when it start reading from left to right, okay, जब उसने left to right evaluation, order of evaluation is from left to right. So first it has evaluated plus plus a. Now answer is 1. Then your compiler got OR. So now your compiler is going to shift on this short circuiting of logical operators and not going to evaluate any of this. Doesn't matter. We have a higher precedence of AND as compared to OR. So answer for this question is 100, and the reason is dependent upon these 3 factors, and the some unpredictability which we got today is due to this short circuiting of logical operators. I hope you got this, guys. सर फिर हम ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन को ज्यादा वैल्यू देंगे बजाय कि ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस से? नहीं बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे आपका, लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस बच्चे हमारा ये चीज डिसाइड करता है. लेट्स सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस विद ये वाला. अगर बच्चे आपका यहाँ पर ये होता b मल्टीप्लाई c, तो आप क्या करते हैं बच्चे? लेट्स से आपके a में है 5, b में है 3 into 2. आपने evaluate, you start evaluating this side. You got a is equal to 5, then you got plus operator. क्या आप कुछ कर सकते हो 5 plus, बट आपके कंपाइलर ने बोल दिया कि यहाँ से b नहीं उठाना, पहले पूरा इसे evaluate करो, then इसे यूज करो. समझ रहे बच्चे? Yes sir. हमारी evaluation, we have started our evaluation from this side, but our compiler has stopped us. Okay, you can read a5, then you can read the operator plus, but for the right hand side operand,
we need to evaluate first B into C. Only then we can use these values. Okay, but as we know that in Yes, logical operators we have a short circuiting issue, so we can skip this thing. Okay, right, bache? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, any doubt? And okay, huh? So and just one more, huh? It's kind of the behavior which I have observed in your coding group. Okay, okay, and this is the just an announcement, huh? For everyone. Okay, so bache, I have seen that number of students are doing some good problems from the different online platform. Okay, they are practicing some simple dynamic programming question, and they are familiar with arrays, pointers and all that. Okay, so please मेरी एक request है कि I know that different students are at different level, तो some बहुत basic से start हैं जिन्हें अभी तक I think जितना मैंने पढ़ाया उतना ही पता है C के बारे में, and some may know the like better than me, even I can say. Okay, so but I just want to tell this to you that please don't get discouraged by seeing your कि ओ यार मेरा क्लासमेट तो यार ये तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग अभी से करने लग गया और मुझे तो एरे भी नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा. ओके बच्चे, तो अपने एक सिंपल पेस पर चलते रहो, ठीक है. और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी गुड है. आई विल गिव यू दी जस्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इफ एल्स एंड देन लूप्स. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रोग्रामिंग असाइनमेंट टू यू गाइस आल्सो. Okay, so but again don't get discouraged, but continuously अपनी जिस भी level पर हो आप, okay, you know your level better than me, so at what level you are, just try just practice more and more question based upon that, and no need to and again no need to go for some like अभी आप hacker rank hacker की problem solve करने लग जाओ, उसकी कोई जरूरत नहीं है. First start making a simple program like write a program to find prime number optimally. Try to write the best logic to find prime number. Try to find the best logic to convert decimal number to binary. Okay, just work on the simple problems. Once we have done with loops, I will give you number of simple and good problems. You can try your try some hands-on on those problems, but by seeing your classmates doing some extra thing, okay, maybe they have spent some extra time और उन्होंने पहले से पढ़ रखा हो, so उन्होंने कुछ hours extra pay किए हैं, that's why they are doing this today, so you can also achieve that particular level. Okay, so now without wasting any further time, let's start with the सर. जी बच्चे जी. सर अगर यहाँ पे A++ की जगह पे A++ होता तो सर वो प्रेजेंट चलता. किसने पूछा क्वेश्चन? नेम योरसेल्फ बच्चे. सर मनप्रीत जी, वेरी गुड. चलो मनप्रीत का एक छोटा सा क्वेश्चन कर ही लेते हैं सॉल्व. ओके बच्चे, सो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा मनप्रीत उसे पार्टी देगा. यस मनप्रीत, वेरी गुड. क्या आंसर आएगा बच्चे इसका? 0 सर. 0 आएगा. 0 आएगा. 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 सर 1 1 1 1 1 1 सर तीनों 1 आएंगे. तो 3 1 1 तीनों 1 आएगा. तीनों 1. और कोई ऑप्शन बची है तो मुझे बता दो. बी सी डी ई एफ जी एच. यस सर 1 0 1 तीनों बनाएंगे सर. 101 ओके. so 1 1 1 सर 1 1 1 Yes. 1 1 सर. Okay, it's very 1 1 1. yes. It's okay. Yes, good. Okay, so बच्चे just use the previous logic जो हमने use किया था. A++ और ++B and यार बेटा. ओके बेटा, मुझे थोड़ा सा अपनी my screen is visible बच्चे or not? सर विजिबल. मेरे पास ही विजिबल नहीं है. ओके बेटा,
Yes, yes, yes. Okay. So in this question, according to precedence, this is how my expression is passed. So when I start evaluating from left to right, first a plus plus, this is the post increment. So we are going to fetch value of a first. So value of a क्या हो गई? 0. Okay. और तो अभी expression evaluate होगा या नहीं? होगा सर। होगा सर। Yes. होगा सर। Value of b and c will become 1. There is no doubt in this. Done. What about this? Once you encounter this semicolon, your a plus plus is also going to evaluate. So yes, answer for this question is 1 1 1. Okay, बच्चे? So yes, let's start. उस वाले क्वेश्चन में जो हमारी स्टेटमेंट की मतलब जो वैल्यू आएगी 0 या 1, वो तो कहीं पे स्टोर ही नहीं हो रही। कोई बात नहीं, वो मैंने प्रिंट भी नहीं करवाई. I have just printed AB value that changes that are made in ABC. That's okay. Either you can do one thing, just take a variable. एरर नहीं आएगा, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ, yes. There is no issue in logical operators. Otherwise you can do this, DA correlate or D यहाँ पर print कर दो. It's up to you. Okay. And yes, and if you have any doubt at किसी भी level का आपको लग रहा है कि यार पता नहीं क्लास वाले क्या सोचेंगे, so please अगर आपका कोई भी doubt है, you are free to ask. Okay. So don't judge yourself based upon someone other's level. Okay. So let's start. Decision statement important है बच्चे. If else. Okay. Number of students in your class already knew the use of if else. So we are going to cover all the basic concept but quickly, and then we have some practice question for today, and I hope that we will cover all this today. Okay, so let's start. Okay, so basically in decision statement, what do you mean by decision statement? While let's say this is your main program and you are writing some code, you are writing code for Microsoft, you got placed in Microsoft, and you are you want, okay, this code I want to execute this code if this condition is true, or let's say you are writing code for Amazon and आपने बोला कि अगर मेरे पास कस्टमर ने 1000 रुपीस की शॉपिंग की है, total is greater than 1000, then I'm going to give him 10% off, else I'm not going to give him anything. Okay, no discount. Okay, in these are called the decision making, that you are making a decision. Okay, इधर जाना है. Okay, so for that we have three instructions in C. First is if else, second is switch, and third is conditional operator. So today we are going to cover if else and conditional operator. Okay, let's go with the syntax. Okay, the syntax of if else if statement is simple. Let's say I am writing a program main int a is equal to 5 if a mod 2 is equal to 0, printf even. Yes, what I'm doing in this question, in this code. Okay. Even number के लिए. I'm checking for whether a number given is even number or not. That's all. Okay. So the condition for your syntax if, then round parenthesis, then we can give the any expression, any operator, a combination of operator that we have studied so far. We can give anything here. You can write it like a is greater than 5, a is less than, कुछ भी लिख सकते हो आप. Logical operators, bitwise operator, okay, arithmetic operator. You can write any combination. Okay. Yes. What will be the output of this? Even. Okay, so yes, so again, so how this condition is evaluated, this your compiler is going to treat it as a condition. So condition ke liye your compiler is always going to seek whether the output of this condition is true or it is false. Okay, so what I have told you about the true and false, how my compiler see whether a bit is whether zero is false and non-zero. Yes, 0 is false, and anything which is non-zero is treated as yes
True. True. So what will be the output of this expression? 5 plus 5, 10. So 3. 10 is non-zero. So non-zero is treated as a true. So आपका जो भी इसकी body में हो रहा if की body में, that is going to be evaluated. Okay. Let's say if I change this to 0, what will be the output? -5. Also, yeah. Okay. -5 plus 5, it will now this expression will become 0. So what your compiler simply do, it will first evaluate the expression what you have given in the condition, then simply evaluate on the true and false. Okay, I think that is enough. Okay, again, let's say if you buy an item of more than 1,000 rupees, then you got a 10% off. Okay, on the total. Otherwise, there will be no off. Okay. So just fix these values. No need to ask from the user. Quantity, let's say आपने ली है 10 और rate था उसका 200. Yes. ठीक है जी. तो अब आपका टोटल क्या बनेगा? Yes. Okay. They in the question they have said that if you are going to buy more than 100 items quantity. Okay. Let's say आप पेन बाय कर रहे हो. Okay. Quantity में आपने पेन बाय किए 2000. मैंने बच्चों को गिफ्ट देने के लिए 2000 पेन बाय किए और हर एक पेन का प्राइस है, बहुत ही एक्सपेंसिव पेन है, 5 रुपीज का. Done. Okay. So yes. Now. Okay, so how your compiler is going to evaluate? So I have stored quantity में 2000, discount is 0, float rate is 5 rupees, and total. I need to calculate total. Yes, according to this question, what will be my total? 9,000. 9,000. 9,000. Okay, good. Okay, actually you are directly calculating it based upon the discount which are given to 10% based upon the 10% discount. Okay, so let's see. Normally when we provide a condition here, we provide a block. This is called the block of or body of if. Okay, when this condition is true, we simply execute the statements given in the body of if. बच्चे जो मैं चीजें थोड़ा टाइम लेकर बता रहा हूँ, प्लीज उसे नोट कर लो. मींस you please pay attention here. Okay, so but in this question there is no body of if. So how many statements are there which are under if? 1. Sir, 1. 1. Sir, 1 by default. Yes. Okay, so you have two options. Let's say कौन है बच्चा स्क्रीन पर जिसका नाम है? Let's say Rahul Ayush. Okay, Rahul Ayush and Gunika. Okay, ये तीन नाम है मेरे पास, and I want to print based upon the, let's say, okay, CG is greater than 7. So I want to print the name of 3 students. Print Gunika, print Rahul, print Ayush. Done. So now I want to print 3 statement if my CG is equal greater than 7. Let's say my CG is 8. Okay. Done. So what I will get printed in this statement? Yes, Gunika, Rahul, and Ayush. Okay. Let's say in this question I am going to remove these brackets. So now what will be get printed here? Gunika. Only Gunika. Okay, good. Why? Because by default when we don't specify this block for if, your compiler is going to consider on very next and only one statement till this semicolon. ठीक है, तो next statement जहां पर semicolon होगा वो हमारे वहां तक हमारा compiler is going to consider. Okay, this is the by default body of if. No need to specify it. Done. So similarly in this question, initially I have given that discount is 0. If I am going to buy a quantity greater than 1,000, then discount I am going to give 10. So now only this statement inside is inside the body of if. Okay. So based upon that you can calculate it. Okay. Yes.
there are different forms of if. Okay, so first form is like this that we have done. If CG is ये वाली example, done, or you can say this example. You can take any example. Done. Okay. If I want to do only one thing, or if I want to print only one statement, तो मैंने क्या किया? Int 5. If a is greater than 2, print f CSC. That's all. Okay, so no need to provide any curly braces. But if I want to do more than one thing, so I need to provide print CSC, print good, printf very, very poor. Okay, so I want to do these three things. Okay, so then for if you want to do multiple tasks inside if, then you need to specify this block using curly brackets. Done. Then we have third form, if with else. Okay, so I think most of you are familiar. Again, I'm going to tell you again. We are going to take same example. So main int a is equal to 5 if a mod 2 is equal to 0, printf even, yes, else क्या हो रहा है ये number? odd. Odd. So in such cases where you want to just evaluate one condition, or based upon that condition you are going to okay, you are just going to wait on this. आप बोल रहे हो कि अगर ये condition true, if this condition is true, I am going to evaluate this. If this condition is false, I am going to evaluate this. So this we evaluate when this is false, and this we evaluate when this is true. So this is the simple case of if else. Done. And again, I think you can do it. If condition, you can do multiple things inside if. If this condition is false, you can do else, and we can also specify the body of else, and we can do multiple things here. Okay. Yes. Then you can write if inside a if. Okay, if condition do this, that is okay. But in else, this is the, yes, ये कौन सा else है associated with this if. Okay, inside this else we are writing one more if. Okay, then condition do this, else do this. So this if is this if else are else. So this is known as nested if inside if. Okay, we can take any example, huh? Like okay, CG is greater than 8. If CG is greater than 8, then you can do printf good, else if. Now inside this else I'm writing if CG is greater than 7, printf average. Okay, else further I can go up to any level if CG is greater than 6 and so. Done, bache? Clear? Okay, now let's start with this. Yes. Okay, so just tell me whether these expressions are going to work or not. Okay. Even the output is written in front of you. If I try to write something like this, what will be the, okay, what is this? This is a simple arithmetic operator. Yes or no? Yes, sir. क्या output आएगी इसकी? And I'm going to evaluate. What will be my output? 3. 5 3. 5 5 yaar. Output will be 5. So inside if we have this expression, and after evaluating this we got 5. So 5 is non-zero, so this is going to work. What about this? Yes.
Sir, A is not Error. defined. Okay, let's say you have written bache int a is equal to 0 and a is equal to 10. Yes guys, please remember there is a difference between assignment and comparative operator. Okay, here we are assigning value of value of 10 in a, and here I am comparing value of a with the 10. Okay, yes, now which expression we are using here? Assignment. Yes. So क्या output आएगी इसकी? Very good. This error देगा सर. False, or it will show an error. Error देगा. Error. एरर रहेगा क्योंकि ए का स्टूडेंट तो कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा. Very good. Yes, what I have told you. What is this? ये क्या था अभी? What was that? 3 plus 2 mod 5. This is a simple arithmetic expression. What is this? When you say a is equal to 10, okay, so this is also a simple expression. Your operation based upon assignment operation. So what your operator, if I have written here, so क्या होगा? It is going to assign 10 value to a and then going to give you value of a. Okay, so there is no error. This condition is true. Done? Yes, what about this? True, false, or error? True. Non-zero number. Any non-zero number? Answer is true. Good बच्चे. ठीक है? अजय. Yes. ये वाला. Yes. सर सेकंड भी एरर नहीं देगा. नहीं बच्चे. बच्चे precedence of modulus is higher than this, so this operation is passed like this. Output of 2 mod 5 क्या आएगी? 0.4. यार, what are you doing? 2. This is modulus operator. Reminder operator. So it will return 2. 3 plus 2, 5. क्या कर रहे हो यार? Huh? A is equal to 10, but it is not going to give error. Okay, because it is simply okay. Let's say okay, you can try these things at your home. अपने system पर try करना. Just write this expression and then try to run it. Or you can write any other arithmetic operation here and then try to run it. Okay. फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू होगी फिर फॉल्स है. ये ट्रू होगी बच्चे. नॉन जीरो आ गया ना, 5 आ गया यहाँ पर. एनीथिंग नॉन जीरो इनसाइड फाइनल रिजल्ट कुछ भी हो, नॉन जीरो हो तो वो ट्रू होगी बच्चे. ओके सर, थैंक यू सर. Okay, done. Okay, so again there is a small question. Just try this question by at your own. Okay, done. So in this question simply you are going to ask about the joining year of our employee, and you are going to check that okay whether employee has served more than 3 years, and if this is true you are going to give that particular employee a bonus of 2500 rupees. Okay, I think you can do this. Just try this question by your own. Okay, and similarly this like in a company employees are paid as under the basic salary is less than rupees. Okay, yes. So that's how the salaries are calculated, huh? So if basic salary is less than 1500, तो then आपका HRA कितना है? बेसिक का 10% होगा और DA क्या होगा? बेसिक का 90%. Okay, else your HRA is fixed, that is 500, and your DA is 98% of your basic salary. Okay, so answer is given in these questions. So if I asked you to calculate the gross salary, I think you are able to write the simple program using if and else. ठीक है बच्चे? I'm just going to after this lecture I'm going to share these notes with you. Okay, and you can try all these questions at your own. And please ये मत करना कि यार slides पढ़ ली, हाँ समझ आ गया. Just try to at least implement try to implement one question at your own. Okay, yes. Now this question is interesting. Okay, we are going to start with this question.
Okay, so let's say the marks obtained by a student in 5 subjects are input through a keyboard. The student get a division as per the rules. Okay, so let's say I'm asking you to give me your give your marks of 5 subject. Let's say आपके marks हैं out of 100, 55, 60, 70, 80 and 85. Okay, then I'm going to take the average. Average आ गया. Now based upon the average, I'm going to give you a division. Okay, so if your percentage lies between 50 to 59, I'm going to give you second division. If your percentage is above or equal to 60, I'm going to give you first division. 40 to 49, third division. Less than 40, I'm going to give you a fail grade. Okay, so now how will you write this program? Quickly, bache, just provide me the basic overview. How many if and in which way you are going to use if. Okay, let's say, okay, let's start with this. Yes. Okay, so let's say मैंने user को बोला कि 5 marks enter कर दो, उसने 5 marks enter कर दिए and I have taken the percentage. मैंने उसकी average ले ली. ठीक है, percentage के लिए. ठीक है बच्चे? Yes. You can say average. So I'm going to solve this question with 3 different methods. So that is my method 1. Okay, so what will be your method? Just let me know quickly, bache. So how will you check? Percentage, I want to check my percentage. अगर मेरी percentage greater than 60 है तो first division. Percentage 50 से 60 59 में है तो second division. 40 to 49 में है जी तो third division और less than 40 है तो fail. Yes, how I'm going to achieve this task? सर if else if लगा सकते हैं. Okay, just overview दो बच्चे quickly. If लगा दिया हमने, yes, चलो इसी question को करते हैं because this is very basic one. Okay, so yes, first is if else if. Done. So what I have done, I have started with this if. Just wait now. Okay, I started with this if. If percentage is greater than equal to 60, I am going to print a first division. Any doubt in this case, बच्चे? Okay, you are going to write आपकी percentage आ रही है 65. आपका आंसर क्या आएगा? First division. Yes, sir. Done. Let's say you have given just forget this. ये सारा भूल जाओ. Let's say मैं directly आपको percentage दे रहा हूँ और average दे रहा हूँ. Okay, PRE. Okay, so if PRE is 55, how my this if else is going to work? If PER is greater than equal to 60, so now what is inside PER now? False. 55, this condition will be false. So I'm going to jump on the else. Else में आ गया मैं. Now what inside my else? I have further if. Now tell me if 55 is greater than equal to 50. True? Yes, sir. Second division. Second division I'm going to bring. Okay, let's compute about 48. 48 के केस में क्या होगा? False. Going to jump here. Yes. False. Going to jump here. ठीक है? What about this? True. True. And I'm going to print third division. Okay, let's talk about the final 33% wala bachcha. Done. So for 33%, this condition is also going to be false. And we are going to printf fail. So that is how we use bache nested if. Okay, that is how we use nested if. So if you clearly want to see this if is associated with this else only, ये वाली if का link is if else के साथ है and this if is associated with this else. Okay, so this is the use of nested. Any doubt in this question? Okay, can we do it in a better way? Some better way, Manna?
Yes. Sir, else if statement. Very good. Someone is said else if statement. Paramveer. Okay, good, Paramveer. Okay, let's see. हाँ, एक और स्टूडेंट ने बताया सर मैं इतना if क्यों यूज कर रहा हूँ, मतलब मींस नेस्टेड इफ एल्स इफ में क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ. कैन आई राइट माय कोड लाइक दिस? जस्ट चेक इट गाइस. और मुझे जस्ट अगेन I am going to eliminate all these things. Okay, I'm directly giving you the value of percentage. Let's check it for 65. First division. Let's set it for 55. Yes, sir. Second. Second. Let's Yes, set sir. it for 47. Yes sir, third वाली हो जाए, third division. Third wali. Let's set it for 33. Fail. Fail. Okay, I think all the conditions are working. So this question is also working according to your problem. But okay, in this question, here we have some issue. What is the problem in this question as compared to the previous one? सारे स्टेटमेंट चेक होंगे, कंपाइलर में नहीं आएगा. Yes, बच्चे repeat one by one. Ankit. सर अगर फर्स्ट इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो सेकंड वाली शायद वो चेक नहीं करेगा इसमें. Very good. Okay, so Paramveer ने बोला कि ये सारे कंडीशन चेक होंगे. And in your coding group, I have seen some एक स्टूडेंट ने बोला था यार optimally प्रोग्राम लिखना क्या होता है? What do you mean by writing a program optimally? So when we talk about optimally, we normally talk about time complexity. Okay, so here here are the factors which are going to affect your time complexity. Okay, so let's say परमवीर के मार्क्स मैंने एंटर किए 61%. ठीक है जी, परमवीर की कंडीशन ट्रू हो गई. So I am checking for only Paramveer na. My this program is going to check only for one student. So I have executed if 61 is greater than equal to 60. Yes, Paramveer got first division. Good. But again we have if. So your compiler is again going to check this condition. This condition is going to false. Okay. Again, then we have another if. So this condition is again false. This again false. So we know that okay, out of these four conditions, only one going to be true. But still, the program is written in that manner that we are checking these all these four ifs for any case. Let's write it for 38. 38 के लिए क्या है मेरे पास? I have to check this. और let's write it for 55. 55 के लिए क्या हुआ? Yes, ये false हो गई, लेकिन ये ट्रू हो गई. एक बार जो ट्रू हो गई उसके बाद मेरे पास दोबारा ये वाली एग्जीक्यूट चेक करनी चाहिए या नहीं? No need to check these. But in this program, my compiler is wasting time in checking the conditions for these if statement also. So that is the problem in this program. This program is giving you correct output, but this is not written optimally. Okay? What is the else if लगा देंगे बाकी yes if के सामने. Very good बच्चे. Okay, so in the first program, your first program is good. It is working optimally. You can say if your this condition is true, we are not going to check else. अगर आपका परमवीर के 61 मार्क्स हैं, I'm not going to check once I have printed first division. I'm not going to evaluate this. Yes, this is this program is written optimally, but the issue is in here we have used nested if. So इससे आपकी जो प्रोग्राम की स्ट्रक्चर है वो थोड़ी मैसी लगती है. That's all. Otherwise, the code for this program is perfectly fine. But in method 2, we have a problem that doesn't matter any condition is true. Our compiler is going to check all the four ifs for every case you provide. Done. Now come to the last one. Okay, the else if clause. Here we have okay guys. One we have if and else. ये तो ये होता है मेरे पास. Done. Then we have a further extension of this known as if else if. Okay. So how this work? If ये condition true, अच्छा ये नहीं true है, ये वाली true है, अच्छा ये भी नहीं true है, ये वाली true है, अच्छा कोई भी नहीं true, then we write else. Okay.
So if any condition out of these three is true, ठीक है? तो let's say, let's see here, huh? In this program, we are left with only 1 minute, huh? I'm just going to take 1 more minute, guys. Let's say again, percentage is 65. So what is going to happen? If 65 is greater than equal to 60, क्या है? True है, false है? True. True. So in this statement, these all, if, else, they all are linked. ठीक है? अगर ये ट्रू है तो इनमें से कोई चेक नहीं होगा और हमारी आउटपुट आएगी सिर्फ फर्स्ट डिवीजन और आपका कंपाइलर यहीं पर बंद हो जाएगा. ओके, लेट्स से यू हैव रिटन 55. नाउ व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? ये फॉल्स हो गई. डन. इट विल गो टू द सेकंड कंडीशन. हियर this condition is true. Okay, it is going to print second division and not going to evaluate these two statements. Okay, guys, done. And similarly, let's say if I'm writing 48, what will happen for 48? False, false, true, and it is not going to check else. Okay, and finally the, let's say you have written 33, तो सभी चेक होंगी. False, 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 true. अगर कोई भी इनमें से कोई भी बच्चे false है तो ये फाइनली हमारे पास जो लास्ट else है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा. Guys, हाँ जी बच्चे. It is compulsory to write every time else condition. Yes, बच्चे. In else if you need to provide, there must be a condition inside the parenthesis, but for the else, no need to give any condition. That is automatically the, you can say, by default case. Okay, which is not suitable according to any these condition. Okay, guys, just wait for a minute, huh? Just wait for a minute, and I have downloaded the attendance. That's all for the day. And if you don't have any doubt, you may leave. Okay, those who have doubt, they can wait for just 2 minutes. Okay. Okay, guys, huh? Yes. Yes, please tell now. Okay. Yes, and I'm going to repeat it again. It is mandatory to provide condition in with if and with else if, but there is no there is not any condition. No need to provide any condition with else. ठीक है बच्चे? Yes.
कोई डाउट हो बच्चे आप पूछो। वेरी गुड। सर फर्स्ट और थर्ड अप्रोच में से ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच कौन सी है? फर्स्ट और थर्ड में से बच्चे इफ यू टॉक अबाउट द टाइम, तो हमारे पास एलसिफ वाली अप्रोच मिली सेकंड्स में कम लेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ इस प्रोग्राम पर रन करोगे तो आपको उसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, ठीक है। अदरवाइज जो कोड लेंथ की प्रॉब्लम है ना? हाँ, कोड लेंथ की भी प्रॉब्लम है। और सेकंड बच्चे अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर मैंने थर्ड अप्रोच में मैंने सिंपल कंपैरेटिव ऑपरेटर यूज किया, और वहां पर मैंने इन दी फर्स्ट नहीं ठीक है, फर्स्ट और थर्ड में बोल रहे हो ना। हाँ, कोड लेंथ का इशू है बच्चे, और वहां पर हम एल्स के बाद इफ पर जा रहे हैं, और यहाँ पर हम डायरेक्टली एज स्टेप पर ही कंडीशन चेक कर रहे हैं। सो ये ज्यादा ऑप्टिमल है। हाँ जी। यस बच्चे, एनी अदर डाउट? सर यस बच्चे, वन बाय वन प्लीज। सर अगर हम इफ में लाइक 3 स्टेटमेंट्स डाल दे तो वो कौन सी वाली एग्जीक्यूट करेगा? मतलब जैसे लाइक हम लिख दें इफ a is equal to 101, तो फर्स्ट वाली उठाएगा कि लास्ट वाली? 1, 0, 1। अच्छा, ये चेक करना। वैसे जो परमवीर, ये जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था ना, अगर आपको रिमेम्बर हो, इंट a is equal to 1, 2, 3 वाला, तो a की क्या वैल्यू साइन कर रहा था? वो 1 ही उठा रहा था ना? 1 उठा रहा। बट इसमें सर राइट मोस्ट उठा रहा है। मैं कंपाइलर में डाल के देखता हूं। सर राइट मोस्ट चेक करेगा। अच्छा, कंपाइलर में डाल के राइट मोस्ट चेक करता है। 1 उठा। परमवीर ये मैं डाउट अगेन, हाँ यार, मैं ये डाउट पर थोड़ा सा काम करते और फिर बताऊंगा तुझे, ठीक है। हाँ, इसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, ठीक है, वो मैं आपको फिर सर ये साइन लेफ्ट मोस्ट कर देगा एक को, और लास्ट पे स्टेटमेंट चेक करके उसका आउटपुट दे देगा। जैसे ये वाला है ना, a is equal to 1, 2, 3, तो क्या साइन ये 3 कर रहे हैं यहाँ पर? ये 3 जो स्टेटमेंट है वो चेक करेगा, 3 ट्रू स्टेटमेंट है, तो वो जो भी आगे कोड होगा एग्जीक्यूट कर देगा उसको। वो तो ठीक है, दैट इज ओके, बट इसके बाद अगर आप a प्रिंट करो तो a में क्या आ रहा है, वो मुझे बताओ। 1 आएगा। हाँ, a के अंदर 1 है। हाँ, दैट इज वो कोई इशू नहीं, ठीक है। और सर अगर वहां पर 3 की जगह हम 0 डालते हैं तो वो मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, वो फॉल्स देता है, ठीक है। हाँ, ये मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी, अदरवाइज ये इसका सही है। फिर भी मैं इसकी जो इफ के अंदर प्रीसीडेंस है, एसोसिएटिविटी है, उस पर कोई इफेक्ट पड़ता है ना नहीं पड़ता परमवीर, आई विल गेट टू, मैं ये कल आपको बताऊंगा, ठीक है। यस, एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर वो अगर जैसे आपने टाइम की बात की है, वो इफ एल्स की, तो उस हिसाब से तो टर्नरी और इफ का सेम टाइम लगना चाहिए। बच्चे जसतीरत, अगर आप इस क्वेश्चन में ना, एक हमारे पास टाइम का फंक्शन होता है, नेट पर सर्च कर लेना, उसके लिए एक time.h आपको लोड करनी पड़ेगी। वो आपके एग्जीक्यूशन में, या फिर आपका जो डेवसी कंपाइलर है या जो दूसरे कंपाइलर है, वो तो टाइम दे ही देते हैं ऑनलाइन कंपाइलर भी, कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। अदरवाइज आप एक इनबिल्ट फंक्शन यूज कर सकते हो, वो टोटल जो आपका रनिंग का मतलब कंपाइल करने का और एग्जीक्यूशन का टाइम है, दोनों देता है। तो जस्टिरत, अगर आप इन दोनों क्वेश्चनों के लिए चेक करोगे ना, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी योगिन का क्वेश्चन था कि सर कौन सा ज्यादा ऑप्टिमल है, तो बेस्ड अपॉन द कोड लेंथ, ओके, वी कैन से दैट द थर्ड अप्रोच इज मोस्ट ऑप्टिमल इन दीज 3 अप्रोचेस। तो सर उस हिसाब से तो फिर टर्नरी का कम हो गया टाइम। टर्नरी में एग्जीक्यूशन कैसे होती है? हाँ, एक्चुअली एक और चीज है, शॉर्ट कोड हमेशा टाइम कम नहीं का मतलब नहीं होता, लेकिन यस यू कैन से, ठीक है। लेकिन अगर एक काम करना जस्टिरत, इन तीनों का टाइम लेकर आना, कोई भी इफ एल्स सिंपल जैसे इवन नंबर का प्रोग्राम बनाना, ठीक है, उसे सिंपल इफ एल्स के साथ और अपना टर्नरी के साथ करना और टाइम निकालना, बताना मुझे क्या है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी अर्शिका सर। हाँ अर्शिका बच्चे बोलो आप। हाँ जी सर, मेरी कंडीशन ये थी कि जैसे सर, जैसे इसी वाले प्रोग्राम में जो सर है, इसमें फर्स्ट डिवीजन थर्ड डिवीजन तक वाली कंडीशंस अप्लाई हों और एल्स वाली अप्लाई ना हो, तो सर ये कंपलसरी है? हाँ बच्चे, एल्स कंपलसरी है। लेट्स सपोज आप ये नहीं लिखना चाहते ना, यू डोंट वांट टू राइट दिस, है ना, तो बच्चे ये आपका एरर देगा। क्योंकि अगर बच्चे आप अकेला इफ यूज कर सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन। आप इफ के साथ एल्स यूज कर सकते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन। अकेला एल्स नहीं यूज कर सकते,
बट अगर आपने इफ एल्स का ब्लॉक स्टार्ट कर दिया, आपने एक इफ लिख दिया और एक एल्स इफ लिख दिया, तो हमने अपने कंपाइलर को ये भी तो बताना है ना अंशिका। लेट्स सपोज आपकी ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, आपने सिर्फ ये दोनों लिख दी। लेट्स सपोज कोई ऐसा टेस्ट केस है जहां पर आपकी ना तो कंडीशन 1 ट्रू है ना तो कंडीशन 2 ट्रू है। सो आपके कंपाइलर के पास कुछ ऐसा भी होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो वो एल्स पर जाए। अगर बच्चे आप एल्स नहीं लिखोगे तो इट विल थ्रो यू एन एरर। ओके ठीक है, ओनली इसके साथ कंपलसरी नहीं है। आप अकेला इफ लिख रहे हो दैट इज ओके। आप इफ के साथ यहाँ पर इवन नंबर कुछ भी लिख दो, अगर ये ट्रू होगी ये चल जाएगा, अदरवाइज वो अपने आप आगे चला जाएगा, दैट इज ओके। ओके सर। हाँ ओके बच्चे, यस रंजन। हाँ जी बच्चे। सर जैसे इसमें सर 4 कंडीशन थे तो 4 था सर कंडीशन, तो ये 2 बार एल्स इफ स्टेटमेंट यूज किए सर। अगर एक और कंडीशन रहता तो एक और बार यूज कर सकते हैं सर। यस यस यस, एल्स इफ बच्चे रंजन बच्चे तुम इफ के बाद एल्स इफ विद कंडीशन n टाइम यूज कर सकते हो। n तुम्हारा 100 है, 1000 है, इनफाइनाइट है, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन लास्ट में एल्स जरूर होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। यस बच्चे, कोई और डाउट? सर हाँ जी बच्चे। वो फिर इफ एल्स इफ और स्विच केस में क्या फर्क हुआ, क्योंकि काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं ना। नहीं बच्चे, फर्क है, बहुत फर्क है। नहीं, क्योंकि वो भी जैसे स्विच केस में भी तो वैसे ही करता है ना, केस चेक करता रहता है, अगर ब्रेक दिख गया उसे, जैसे ही केस ट्रू हुआ ब्रेक दिखा वो उससे बाहर आ गया, इसमें भी जैसे ही ट्रू हुआ ये तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है बच्चे, जो स्विच नहीं कर सकता, और कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमारा एल्स इफ एल्स नहीं कर सकता, लेकिन स्विच की लिमिटेशंस ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जिस स्विच में अगर जैसे हम डायरेक्टली हमारा कंपाइलर एक स्टैटिक एक्सप्रेशन कंपेयर करता है तो स्विच की एग्जीक्यूशन फास्ट है, लेकिन स्विच की लिमिटेशंस बहुत है। आप वहां पर फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। ठीक है, आपका जो कांस्टेंट होगा वो वेरिएबल नहीं हो सकता, वो आपको पहले प्री डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इफ एल्स में ये पूरी पावर है कि आप उसमें सिंपल लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है समनीत, कल लेक्चर में बच्चे हम स्विच स्टार्ट करेंगे तो तब वहां पर डिस्कस करेंगे इसे। ठीक है सर। सर एक वो भी जो था कि वो एक मिनट मैं देखूं क्वेश्चन क्या था। ये जो आपने लिखा था a++ और ++b एंड ++c, इसको जब हम d में डालेंगे तो d की वैल्यू भी 1 आएगी ना, मतलब हाँ, तो d में स्टोर क्या हो रहा है एक्चुअली, पर d में स्टोर क्या हो रहा है फिर एक्चुअली? d में इसकी आउटपुट स्टोर हो रही है ना बच्चे। आउटपुट किसकी सर? ये तो a b c 3 चीजें हैं ना। नहीं सुन वेट, ये स्क्रीन विजिबल है ना समनीत? हाँ जी सर, आ रही है ना। तो अगर बच्चे मैं ये लिखता हूं तो d में क्या स्टोर होता है? ये b और c की मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन। पहले आप ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट करते हो ना, हमारा जो ये मैंने बताया भी था क्लास में, असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट हैंड साइड एवेल्युएट होती है, देन असाइनमेंट होती है। तो अगर आपने यहां पर ये लिख दिया, ठीक है, तो पहले तो ये एवेल्युएट होगा ना पूरा, ये किसी भी ऑर्डर में हो एवेल्युएट, जो भी इसकी फाइनल आउटपुट आई है वो यहाँ पर फिर बाद में स्टोर होगी। ठीक है ठीक है। हाँ जी बच्चे, कोई और थैंक यू सर। ओके बच्चे, ओके देन बच्चे, थैंक यू सर। ओके बच्चे, आई एम लीविंग मीटिंग नाउ। हाँ, थैंक यू सर।